So we'll take an overlap. The Liberation of the Spirit, page 676. So the ego turn, the separative turn of the being, is the fulcrum of the whole embarrassed labor of the ignorance and the bondage. So long as one is not free from the ego sense, there can be no real freedom. The seat of the ego is said to be in the buddhi. It is an ignorance of the discriminating mind and reason which discriminate wrongly and take the individuation of mind, life and body for a truth of separative existence and are turned away from the greater reconciling truth of the oneness of all existence. At any rate in man, it is the ego idea which chiefly supports the falsehood of separative existence. To get rid of this idea, to dwell on the opposite side, opposite idea of unity of the one self, the one spirit, the one being of nature is therefore an effective remedy. But it is not by itself absolutely effective. For the ego, though it supports itself by this ego idea, aham buddhi, finds its most powerful means for a certain obstinacy or passion of persistence in the normal action of the sense mind, the prana, and the body. To cast out of us the ego idea is not entirely possible or not entirely effective until these instruments have undergone purification. For their action being persistently egoistic and separative, the buddhi is carried away by them. As a boat by winds on the sea, says the Gita. The knowledge in the intelligence is being constantly obscured or lost temporarily and has to be restored again. A very labor of Sisyphus. But if the lower instruments have been purified of egoistic desire, wish, will, egoistic passion, egoistic emotion, and the buddhi itself of egoistic idea and preference, then the knowledge of the spiritual truth of oneness can find a firm foundation. Till then, the ego takes all sorts of subtle forms and we imagine ourselves to be free from it. When we are really acting as its instruments and all we have attained is a certain intellectual poise, which is not the true spiritual liberation. Moreover, to throw away the active sense of ego is not enough. That may merely bring an inactive state of the mentality, a certain passive inert quietude of separative being may take the place of the kinetic egoism, which is also not the true liberation. The ego sense must be replaced by a oneness with the transcendental divine and with universal being. Even reading is laborious.
about what all have to be thought about and let go. And it's so good that I don't have to do it. It's another power that will do it. It has to do it. In the synthesis only in the chapter 4a, Hmm. there is something which is resonating. It was very beautiful. Hmm. Sri Aurobindo says that because we fail to distinguish our higher self from the lower, through which he is preparing his self-revelation. As in the world, so in ourselves, we cannot see God because of his workings and especially because he works in us through our nature and not by a succession of arbitrary miracles. Man demands miracles that he may have faith. He wishes to be dazzled in order that he may see. Very interesting, huh? And this impatience, this ignorance may turn into a great danger and disaster if, in our revolt against the divine leading, we call in another distorting force more satisfying to our impulses and desires and ask it to guide us and give it the divine name. कि नहीं होता तो बहुत अच्छा है. Again, it was very nice. Yeah. वही जो जैसे होता है ना, हम बात करते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड में भी ग्लिटर 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 ग्लिटर, और यहाँ पे भी जब तक वो है ना कुछ वाओ है ना वैसा नहीं है, तो इसका मतलब डिवाइन ग्रेस इज नॉट वर्किंग. Do you question the existence of the divine? Yeah. Because, and that's why they say, right? Like there are so many births, avatars, reincarnate, what what जैसे अब साई बाबा है ना, lots of miracles. तो so much ये तो followership, तब so तक much विश्वास ही नहीं होता. विश्वास ही नहीं होता कि इसमें क्या बात है. Yeah. Yeah. इसी के आगे एक छोटा सा और था. God is the all and more than the all. But that which is more than the all, how shall man conceive? And even the all is at first too hard for him, for he himself in his active consciousness is a limited and selective formation. Something on these lines, but वही जैसे ये बात हो रही है कि सोचा ही नहीं जाता है ना, ऐसा लगता है बस this limited, this limited. Yeah. एक्चुअली इस वाले पैराग्राफ में यही दिख रहा है कि अगर छोटे से मुक्ति चाहिए तो बड़ा पाओ. जैसे कह रहे हैं ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ कह रहे हैं द ईगो सेंस मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अ वननेस विद द ट्रांसेंडेंटल डिवाइन एंड विद द यूनिवर्सल बीइंग. ये वाला, तो ये इसके बिना चारा नहीं है. मतलब ही डजंट स्टॉप एनीवेयर मिडवेयर, है ना, कि ये भी नहीं चलेगा, इससे भी काम नहीं चलेगा, इससे भी काम नहीं चलेगा, तो इससे है ना इससे नीचे रुक नहीं पाओगे, बिकॉज फुलफिलमेंट चाहिए, है ना. तो वो कह रहे हैं कि ये पैसिव एक्टिविटी नहीं चाहिए हमको, कि एक्टिव तो ईगो आपने छोड़ दी, बट पैसिव में तो है ना ईगो सेंस. So moreover, to throw away the active sense of ego is not enough. That may merely bring an inactive state of the mentality, a certain passive inert. तो मतलब कुछ एसेंट नहीं हुआ. सो जैसे अशुपति का एसेंट बताते हैं सावित्री में, दैट ही असेंड्स द लैडर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड देन ही यूनाइट्स विद दैट कॉस्मिक स्पिरिट.
kind of reclaims his जीवात्मन और सेंट्रल बीइंग, तो वही उससे उसके बिना काम नहीं है, ऐसा लगता है ये, है ना, मतलब उसके बिना ये रहेगा, ईगो सेंस मस्ट बी रिप्लेस्ड, क्योंकि कुछ तो हो ना, वो क्या कुछ हो, या तो छोटे रहोगे और या फिर जो एक्चुअली में हो उसको धीरे धीरे रियलाइज करोगे, उस सीढ़ियों पे आगे बढ़ोगे. तो द ईगो सेंस मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अ वननेस विद द ट्रांसेंडेंटल डिवाइन एंड विद द यूनिवर्सल बीइंग. So I feel that this resonates with that ascent of consciousness of Ashwapati and also of Savitri, है ना, same, पहले finding of the soul and then finding of the central being above. जो वो योगा ऑफ द सोल्स रिलीज है पहले वाला, तो है ना, अश्वपति वाला योगा ऑफ सोल्स रिलीज, फिर है द योगा ऑफ स्पिरिट्स ग्रेटनेस एंड फ्रीडम. तो नॉट ओनली दैट बट अगेन, है ना, मूविंग ऑन मूविंग ऑन. So this we had already touched upon. At any rate, in man, it is the ego idea which chiefly supports the falsehood of a separative existence. That I end here, and then the rest of the world and the rest may go into hell, but I want heaven for my own self. You know? So this idea of separative existence. To get rid, I think तभी बुद्धिज्म में देखो ना आप, इतने सारे प्रैक्टिसेस हैं जिसमें सेल्फ एब्नेगेशन, जैसे टोंगलिन भी ले लो, तो उसमें तुम कह रहे हो कि हाँ तुम मुझे अपनी सफरिंग दे दो, है ना. सो अगेन वो सेल्फ एब्नेगेशन वाला पार्ट हो रहा है कि अब अपने लिए मुझे नहीं चाहिए, है ना, वो जो बेगिंग 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 ऑल द टाइम है. And as long as I listen to that dictate of begging, I am propelling that ego idea. I am believing that yes, I am this person who is always lacking and needs to be fulfilled through this or that. So negating that. So at any rate, in man it is the ego idea which chiefly supports the falsehood of a separative existence. To get rid of this idea, to dwell on the opposite idea of unity of the one self, the one spirit, the one being of nature, is therefore an effective remedy. मतलब ये भी बहुत अच्छा सोचना है ना, कि that we are all interconnected and there is no, है ना, knowing that we are all interconnected and reflecting and contemplating on that interconnectedness. But he says it is not by itself absolutely effective. उसकी भी अपनी जगह है, but not absolutely effective. For the ego, though it supports itself by the ego idea, aham buddhi, finds its most powerful means for a certain obstinacy or passion of persistence in the normal action of sense mind, the prana and the body. So as long as वो सेंसरी इनपुट आ रहा है, मैं उसको समझ रही हूँ, है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ, as long as I have desires which I am fulfilling, this body which has to be taken care of. So ये सारी चीजें, it's like इसकी जिद, obstinate is like जिद्दी, है ना, तो वो उसके साथ इन सारी चीजों के साथ वो चिपकी हुई है, मेरी डिजायर, मेरे सेंसेस, मेरी बॉडी. To cast out of us the ego idea is not entirely possible or not entirely effective until these instruments, मतलब मन बुद्धि और ये जो senses हैं, they all have gone purification. ये वही बात हो गई, हमने वो प्यूरिफिकेशन वाला पढ़ा था, यू रिमेम्बर, वेयर ही वाज शेयरिंग दैट एवरीवेयर दिस साइकिक प्राणा हैज इन्वेडेड लाइक पॉइजन, चिपचिपापन, है ना, एक तरह से हर जगह है, मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए. Yeah, so purification, to cast out of us the idea, the ego idea, is not entirely possible or not entirely effective until these instruments have undergone purification.
for their action being persistently egoistic and separative. मतलब कुछ कर नहीं सकते, it is egoistic and separative. The buddhi is carried away with them, by them. Interesting. मतलब वो बुद्धि फिर बुद्धि रही कहाँ एक्चुअली में, नाम उसका बुद्धि रखा हुआ है कुबुद्धि हो गई एक तरीके से, नहीं, carried away with the senses and desires and belief in a separate existence, as a boat by winds on the sea. So I think yesterday or sometimes when we were talking, so as in again, buddhi is an instrument, है ना? Buddhi too, depending on the center of operation, है ना? I can use it, like it can be subuddhi or kubuddhi. Like say according to Duryodhan, he would be doing the right thing, right? According to his father, his son is right. No matter what the world can see or anything, one just feels कि नहीं ये तो सही है ना? Because it is based on all this sense, है ना, ये जो sense, Yeah. mind, prana and the body, मेरी desire, मेरी इच्छा, है ना, हाँ, मैं अपने आप को कैसे चोट पहुंचा लूं, तो जब तक मैं अपने आप को ये लिमिटेड पर्सन समझता हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे सब ठीक ही लगेगा, है ना, बुद्धि के हिसाब से। मतलब बिकॉज जो देख रहा है मेरे अंदर, जो जज कर रहा है, अगर वही लिमिटेड है तो वो बिग पिक्चर कैसे देख पाएगा, है ना? वो नो वन डिस्क्रिमिनेटली कैसे उस चीज को अनबायस्ड देख सकेगा कि नहीं गुड देख और सकता, बैड या नहीं ट्रू देख ट्रू, सकता। या सो दिस the knowledge in the intelligence is being constantly obscured or lost temporarily and has to be restored again, a very labor of Sisyphus. मुझे लगता है Sisyphus must be some Greek, है ना, कुछ वो होगा। एक सेकंड, एक बार रेफरेंस देख लेते हैं। The myth of Sisyphus. Roll a rock up a hill only to watch it roll back down ad infinitum. His curse is one of action with no meaning. Oh, a very labor of action with no meaning यहाँ पे। सो मतलब आप बार बार उसको रिस्टोर कर रहे हो बट उसका रूट नहीं जा रहा ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द नॉलेज इन द इंटेलिजेंस इज बीइंग कॉन्स्टेंटली ऑब्सक्यूर्ड और लॉस्ट टेम्पोररीली एंड हैज टू बी रिस्टोर्ड अगेन, बट वो नेवर एंडिंग है। बार बार ऑब्सक्यूर हो रही है, बार बार वो कर रहे हो, क्योंकि वो रूट पे नहीं जा रहे हम। या वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ इंटरेस्टिंगली ही मेक्स यूज ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज। हमारे चक्षु खुल जाते हैं देख के ये, फिर वापस बंद होने के लिए। But if the lower instruments have been purified of egoistic desire, wish, will, egoistic passion, egoistic emotion, and the buddhi itself of egoistic idea and preference, then the knowledge of the spiritual truth of oneness can find a firm foundation. Beautiful. Yeah. मतलब मुझे लगता है कि देखो ना, हम बार बार बात करते हैं कि आपको हमको कुछ बाहर नहीं मिलेगा, तो इस चीज को नॉट ओनली मेंटली समझ जाना, बट this being a practical realization in myself that I find that well of contentment within myself, so that जो ये outpour of restless energies होता है मेरा वर्ल्ड पे, वो खत्म हो जाए, so only then one can have a firm foundation. नहीं तो अदरवाइज तो आई सी इसकी कोई नेवर एंडिंग है ये जो, अगर इफ आई डोंट हैव अ कांस्टेंट एंड नॉट ओनली कांस्टेंट बट एन इंक्रीजिंग कनेक्शन विद अ कंटेंटमेंट विद इन माई बीइंग, तो कैसे ये हो सकता है दैट आई एम प्यूरिफाइड ऑफ इगोइस्टिक डिजायर, विश, विल, मतलब आई विल बी वांटिंग बिकॉज देयर इज अ इनहेरेंट लैक। मैं अपने आप को वो समझूंगी, लैक समझूंगी, तो बार बार मुझे बाहर भागना पड़ेगा फुलफिल करने के लिए, फिर उसकी वजह से बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। I can't help it. But once this is purified, slowly, slowly, and
Later he says that purification means that also that fulfillment that one gets as replaced by a universal being. Till then the ego takes all sorts of subtle forms, pata bhi nahi lagta, and we imagine ourselves to be free from it when we are really acting as its instruments. Wah, maya maha thagni hum jani. When we are really acting as its instruments and all we have attained is a certain intellectual poise, which is not a true spiritual liberation. Very interesting. Moreover, to throw away the active sense of ego is not enough. Yeah. Ego sense must be replaced by a oneness with the transcendental divine and with universal being. ये तो साधना का काम है, सुनो, ये तो है ना, मतलब ये तो इनर हमारी साधना है जो बार बार हम जिससे स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, क्योंकि बाहरी एन्चैंटमेंट्स इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि अदरवाइज तो वही बॉडीली जैसे होता है ना, एक बॉडीली रियलाइजेशन का काम है, अदरवाइज दिस सेंस ऑफ लैक always as if it persists. तो मतलब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसमें ये है कि मैं जब तक मैं एक छोटी इंसान हूँ तब तक आई कांट प्रिवेंट दिस ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ माई बुद्धि and intelligence. It will keep getting obscured because of all the sense perceptions, because I think that I am this little person, this little me, and either I can just continue that labor, ta 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 ta, go on and on and on, bar bar obscurity, then bar bar clarification, bar bar obscurity, bar bar clarification, or then the other task is done, which is this sadhana of ascent and then realization of one's being, that we are actually that universal being, ताकि फुलफिलमेंट, कहीं ना कहीं तो फुलफिलमेंट होनी है, तो वो यहाँ पे अल्टीमेट, नॉट ओनली अल्टीमेट ना, ऑफ कोर्स इट गोज ऑन. ये मुझे वो वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है, एक किसी ने शेयर किया था, जैसे कोई एक बंदा है, वो एक ग्लास लेके ओशन का पानी, बिकॉज ही इज प्यासा, इन अ ग्लास ही वांट्स टू फिल अप दैट ओशन, and he's trying and still he says, I'm still hungry, like thirsty, more, or चाहिए, the ocean is not fully in the glass. So what he does is he throws away the glass in the ocean. ये दो लास्ट वाला जो कह रहे हैं, the ego sense is replaced by a universal being. तो या तो उसमें लगे रहो, egoistic desire, wish, passion, मतलब क्यों fulfillment तो it's like we are all thirsty for that fulfillment because it's our destiny. तो या तो उस तरीके से कोशिश करते रहो, छोटे में बड़ा भरने की कोशिश, जो कभी, it's like a never ending process. And Sri Aurobindo says at one point, I don't know whether here or where, he says that our thirst is incessant. Why? Because it is a thirst of an infinite being. तो इसलिए वो थर्स्ट भी इनफाइनाइट है. और तभी देखते हैं कि चाहे कितना भी हम एक्यूमुलेट कर लें, प्यासे ही रहते हैं.
कितने भी आसपास हम इकट्ठी कर लें चीजें, जने बेस्ट कर लें अपना, जो अपने सोचा था अपने हिसाब से, तब भी प्यास प्यास रहती है, बनी रहती है। या सो वी कैन स्टॉप हियर, कुछ और है तो इसमें ले लेते हैं ये वाले पे। Just this line where it says that as a boat by winds on the sea, says the हम्म Gita. हम्म So once we were just, I don't know what the topic was, self-worth. तो उस हम्म पे जस्ट वी वर रिफ्लेक्टिंग, और उसमें ये था कि जैसे अब एक छोटा सा बोट है या प्लैंक है और वो सी में है, तो वो कितना बुरी तरह ऊपर नीचे जाएगा, राइट, टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा। उसके बाद बोट आएगी, बड़ी बोट और स्टेबल शिप, और शिप जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बट स्टिल इट्स मूविंग, राइट, until what can be in the ocean and not move? Probably an island, right? And that island means it's connected to the source हम्म fully. Till you are in the water हम्म without that connection, no matter how big you become, which will be good, that's the process, there will be the movement. But if the connection happens, कि joint हो गया है ना, हम्म then it will stop हम्म moving, and now it's in the ocean, but in हम्म island, so it's not moving. हम्म Yeah. हम्म But otherwise, तो ये जो एक basic इमेजरी है, और गीता की सारी इमेजरीज ही काफी अमेजिंग होती हैं, वन कैन फील, राइट, लाइक एक तरफ ही है दैट मदर इज सेइंग हाउ लिटिल circumstances मैटर, लाइक आउटर, एंड देन समथिंग हैपेंस एंड आई गो डूम. सो हम्म हम्म you know as a boat by winds on the sea, and they can be very brutal, right, और चाहे जहां भी ले जा रहे हैं, हम्म बोट के पास तो कुछ है ही नहीं, अनलेस धीरे धीरे सेल आएगी, फिर हम्म और चीजें आएंगी. Yeah, just that. हम्म And I think this is why even lot of times one feels ना कि जैसे कुछ हो रहा होता है, rather than seeing कि where is it taking me, I हम्म start crying, है ना, कि मेरे साथ क्या हो रहा है, why is it so hard, why did he has to make this world, what is the purpose, because it feels कि कुछ कंट्रोल ही नहीं है ना, मतलब कि कहीं पे भी कुछ भी, that perception you keep getting when you are totally the या boat being swayed by the winds. या आई थिंक तभी जैसे बुद्धिज्म में वो उसकी बात करते हैं ना, ग्राउंडलेसनेस या इम्परमानेंस की, तो आई थिंक इट्स गेटिंग वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ दिस स्वेइंग, कि ये तो होगा ही, मतलब इससे तुम बचाने की कोशिश, अब जैसे हम कितना फ्यूटाइल एफर्ट करते हैं बचाने में अपने आप को, कि स्वे ना हो, स्वे ना हो, उस सेंस में, ऊपरी सेंस में कह रही हूँ। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में, एंड नॉट ओनली स्टार्टिंग, आई थिंक इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल टू थिंक अबाउट इट दैट वी हैव नो ग्राउंड, Mm, there is uncertainty, there is swaying, there is sweeping away, but to have a ground in the groundlessness, वही जैसे to have the ground in the infinite or the divine, mm, वो possible है, that you become mm, very comfortable with that, and then the swayings can be taken as lessons. mm, वही जो आप कह रहे थे कि इनिशियली हम ये नहीं कर पाते हैं कि मेरे को क्या मिल mm, रहा है, मतलब बहुत रेयरली एक इंसान होगा जिसका सबसे पहला ध्यान इससे जाएगा कि अच्छा इससे मुझे क्या मिला, ये जो हिलाया है ना, वो भी शायद हमारे प्रीवियस वॉट एवर साधना है ना। अदरवाइज पहले तो यही लगता है कि मेरे साथ क्यों हुआ क्योंकि वो हमारी लाइकिंग के हिसाब से नहीं हुआ, बस है ना, प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं हुआ। वही जो रनिंग टुवर्ड्स प्लेजर एंड रनिंग अवे फ्रॉम पेन, अगेन स्टक इन दोज 8 वर्ल्डली कंसर्न्स, क्योंकि मुझे उससे दर्द मिला तो आई फील अवर्जन फ्रॉम दैट, और जहाँ पे प्लेजर है उसको मैं रिपीट करना चाहती हूँ, mm, रनिंग टुवर्ड्स प्लेजर। और जहाँ पे वो खत्म होता है, उसको स्टॉप लगता है, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट होती है, वहां पे दर्द मिलता है, तो वो मुझे चाहिए नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मतलब पूरी mm, जिंदगी इस दीवार से उस दीवार तक सिर मारते मारते ठा 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 ना, सोचो 2 दीवारें हैं और उसमें बस लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। mm.
और इसी पे शायद कबीर जी के जैसे इतने सारे हैं ना, चालत चालत जुग भया जी, कौन बतावेगा धाम जी। मतलब कितने टाइम से तू कर रहा है भैया, दौड़ भाग, कब तक। और मजे की बात यह है कि मतलब वो इग्नोरेंस कह लो, ब्लाइंडनेस कह लो, ऑब्सक्योरिटी जो अभी बात कर रहे थे ना, इंटेलिजेंस गेट्स क्लाउडेड, सो मतलब पढ़ते हैं, समझते हैं, ऐसा भी नहीं कि लेसन नहीं लेते, लेसन भी लेते हैं उस समय, फिर कुछ एक नया होता है, फिर एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस टेक्स इट्स प्लेस। हम्म, और क्रक्स में जाके चक्कर देखेंगे तो फिर से हम डुअलिटी के चक्कर में फंस गए हैं, हम्म, बट समझ नहीं आता कि ये भूले कहाँ। एक्सक्यूज मी, मतलब ये भूलना हुआ कहाँ, अभी तो सीखा था। हम्म, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। हम्म। You know, in that regard, say if say like recently something happened and somebody was say rude to someone or not हम्म justified. हम्म तो जैसे अगर if I'm standing and there are 10 people around me and I हम्म know there's a person who just shouts or हम्म screams say, हम्म without justification, and हम्म that's his nature, I've seen हम्म it. हम्म And he's been scolding people around me, but हम्म when he scolds me, हम्म 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 it changes. मतलब, हम्म and when I'm seeing, I can see it's not about that person. It's the person that's just shouting that he हम्म just has this affinity हम्म towards doing it the way हम्म हम्म they हम्म do it. हम्म But as soon as it's directed toward me, that again वो separative का हम्म काफी strongly, हम्म subtly कहीं पे घुसा ही हुआ है हम्म, कि I cannot या see. बिल्कुल बिल्कुल। और वही Hmm. मैं कह रही हूँ ना कि इस पे हम, मतलब जो इस पे इनर एफर्ट रिक्वायर्ड है Yeah. वो बहुत ज्यादा है, और उसका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मांगता है वो। Yeah. और हम बार बार उस डिसिप्लिन से फिसलते हैं। जो इनर एफर्ट है, वही जो कह रहे थे ना, ईगो सेंस हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय द यूनिवर्सल बीइंग। Hmm. मतलब तुमने पूरी जिंदगी में कितने महान काम कर लिए हो, लेकिन फिर भी यू आर लिविंग विद दैट ईगो सेंस ओनली, है ना, अभी भी हर्ट होता है, अभी भी सब कुछ होता है। तो वो इनर वर्क जो है वो, उसको कल्मिनेशन नहीं दिया, मतलब तभी एक या Hmm. आध योगी होता है, एक सिगर होता है जहाँ वो कल्मिनेशन पे पहुंचता है। क्योंकि हमको लगता है कि ना वो एक आध तो कर सकते हैं यार, हम थोड़ी ना, नहीं हमारा, हमारा थोड़ी ना काम है, ये उनका काम है। Hmm. क्योंकि उसमें एफर्ट चाहिए, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि उसमें एक्चुअली में बहुत ज्यादा एक, वन कैन से एक एसेटिसिज्म ही चाहिए, ऑफ सर्टेन काइंड। Hmm. अदरवाइज बार बार फिसलोगे, बार बार फिसलोगे, बार बार Hmm. फिसलोगे, Hmm. भूल Yeah. जाओगे। Yeah. And I think again, like it appears to be so far or beyond me. So I think वही जैसे अब if he's talking about purification, है हम्म ना? हम्म That is something it feels I can do because at least what I can see, हम्म। I can keep seeing ये and देखो ना, offering. ये जो Yeah. कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ हाँ, एसेंट, इट इज हाँ. नॉट पॉसिबल विदाउट प्यूरिफिकेशन। Yeah. सिंथेसिस And ऑफ if योगा। I just हाँ look at ascent, हाँ। I can't fathom how to do it. हम्म। Right? It doesn't seem something that in my domain. But या yeah, the gentle हाँ purification, not हाँ gentle, matlab, in the हाँ sense I can, when I हाँ start seeing impurity, that हाँ। is something हम्म which I can do, right? When I हम्म, can see, I can do. बिल्कुल So it बिल्कुल। feels कि ये मेरे domain में है, हाँ मतलब वो इट मेरे स्टार्ट्स, domain, मतलब इट हैज हाँ, टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, बट देन वी विल हाँ, सी दैट नेचुरली, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपने कुछ हाँ, नहीं किया, नेचुरली हम्म, बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजिंग प्योरिटी इन द बीइंग, हम्म, concentration begins to become better। yeah, तो ये सिंथेसिस ऑफ योगा में ये एक चैप्टर है, मुझे लगता है प्यूरिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन वाला, जिसमें इट्स सेड okay, इट्स लाइक टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन, okay, okay, दे गो टुगेदर। okay, और वो हम अपने में देखते हैं, जब ज्यादा प्योरिटी है तो ज्यादा उस दिन कंसंट्रेशन भी लगता है, और जहाँ पे okay. इम्प्यूरिटीज हैं, जहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, वहां पे कंसंट्रेशन भी हमारा, है ना। True, 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 yeah. और Mm, विदाउट कंसंट्रेशन एसेंट इज नॉट पॉसिबल। वो जो जैसे हम प्लेसिंग द कॉन्शियसनेस mm, अबव द हेड कह लें, मतलब विदाउट प्योरिटी, विदाउट a certain level of degree of purity, you can't stabilize your focus there, it is impossible। mm, नहीं कर mm, सकते। mm, mm.
Yeah. ओके, सो यहाँ पे पेज नंबर 677, लास्ट पैराग्राफ.